Namaste. Welcome to another episode of Geopolitics with Captain Alok Bansal. Today, we will be discussing about jihadi terrorism. What is jihad? What is terrorism? And how these two terms are interrelated. Alok ji, thank you for joining us again today. So today we will be discussing about what is jihadi terrorism. So before we move to jihadi terrorism, this term, please tell our viewers what exactly is jihad. See, we need to understand. Very often, people use this term very loosely. Firstly, we need to understand that in Islamic lexicon, in Quranic texts, jihad is the only form of warfare that's been justified. And jihad is against who all is very clearly stipulated. There is a theological understanding of what are the prerequisites of a jihad. Please understand, not anyone and everyone can say that I am waging a jihad. There are certain requirements. Today we use it very loosely. Please understand, the Holy Prophet did not fight people in Makkah even though he had supporters. When people opposed him in Makkah, he migrated. When he had Medina under his control, he recaptured Makkah. So what the Islamic scholars believe is that for a jihad, the first prerequisite is, of course, a righteous leader or a leader who has certain theological or academic credentials, like Prophet was there. And subsequently, if you see, the major jihadi organizations, Al-Qaeda and Islamic States, have always had a leader who has this. But more importantly, in empirical terms, what is required is that you need a territory or a city or a fort under your control. Because, see, Prophet fought and captured Makkah when he had Medina under his control. But when he was in Makkah, he did not fight, he migrated. So, please understand, the capturing or controlling of some amount of territory, now whether it should be de jure, de facto is a matter of debate, but some territory is essential for jihad to be waged. Then again, the second part is that for waging a jihad, you need certain resources, you need to have certain finances. But even more important is that there was a time when Prophet had to fight both the Jews and the Quraysh. He actually negotiated with Jews and fought with the Quraysh. So they say that the army of the fighters should not be less than 50% of the enemy's force that you're fighting at that point of time. So that's another requirement. Of course, there are stipulations. There are a lot of people who have said so. And there were a time when Taliban and Al-Qaeda were talking of jihad during when Osama bin Laden was alive, and many clerics in Pakistan had come out with this stipulation saying that this is not a jihad because of these reasons. But they had countered it, saying that why this is a jihad, and they had given their own postulations. So this is how jihad is required. Jihad, as we see today, is nothing but a manifestation of radical ideologies. And please understand, more radical an ideology, lesser is the tolerance for ambiguity. What happens is that very often people believe that Islam is a monolith. But the fact is, Islam is not a monolith. Even before Prophet passed away, there were differences which had cropped up when he was on his deathbed. And subsequently, there have been differences. Today, the Salafist ideology, which starts from Ibn Taymiyyah, actually, he started the concept of takfir, which is to push people who call themselves Muslims outside the fold of Islam, if according to him, they were not adhering to the tenets of Islam. Because what had happened is, as you know, after Abbasid Caliphate, Mongols had captured Baghdad. And they ransacked the Abbasid Caliphate. But in due course, Mongols themselves embraced Islam. And they started ruling from Baghdad as a Muslim ruler. But what Ibn Taymiyyah said was that they are not righteous rulers because they continue to govern according to Mongol Yasa code and not according to Sharia. And that's when he said that khuruj or revolt against them was justified. And then he started using the term takfir to push them outside the fold of Islam.
And since then, large number of these Salafist organizations have used takfir to push people who call themselves Muslims outside the fold of Islam. And since then, a large number of such organizations have cropped up, and they have been in the forefront of waging what is known as jihad. You said there are differences between among the Muslims around the world. Is there a difference when it comes to the definition of jihad as well? जिहाद की सबकी अलग अलग डेफिनेशन है, कोई कुछ मानता है, कोई देश कुछ मानता है. देखिए, इसमें भी क्या है कि लोगों का ये मानना है कि दो तरीके के जिहाद होते हैं, एक लेसर जिहाद, एक ग्रेटर जिहाद. एक ग्रेटर जिहाद है जो आपके अपने अंदर होना चाहिए, जो टेम्पटेशंस हैं, जो बुराइयां हैं, उनके खिलाफ जिहाद होता है. और जो लेसर जिहाद है, जो तलवार का जिहाद है. जो मॉडरेट मुस्लिम्स हैं, मॉडरेट नहीं है, एक्चुअली काफी लोगों का ये मानना है, लेकिन मैनिफेस्टेशन इसका ऐसा है कि नहीं है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है. समय समय पर जो जिहाद की बात हुई है, कई बार जब कैलिफेट के टाइम में जब मुस्लिम आर्मीज फॉट विद नॉन मुस्लिम्स, उनको एक टर्म जिहाद का दे दिया गया. सो ऐसा होता रहा है टाइम टू टाइम. और आज की तारीख में जब हम जिहाद की बात करते हैं, तो आज दुनिया में दो प्रमुख ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अल कायदा और इस्लामिक स्टेट या दैश, जो दोनों जिहाद के लिए काम कर रहे हैं. दोनों वैश्विक जिहाद उनका उद्देश्य है, और उनका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, दैट इज द क्रिएशन ऑफ अ ग्लोबल इस्लामिक एमिरेट. एंड दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड. एंड जैसे कि आगे हम चलते हैं, तो वी विल डिफाइन व्हाट अल कायदा वांट्स, व्हाट इस्लामिक स्टेट वांट्स, एंड व्हाई देयर इज अ रिसर्जेंस ऑफ violence that we are seeing in the world today. So how a jihadi is exactly made? Tell us about that. See, firstly, you need to understand that for a person to become a jihadi or become so radicalized as to perceive that he is actually waging a jihad, he has to be brainwashed. He has to believe in an ideology. And this ideology today is permeated through the social media. Both Al-Qaeda and Islamic State do this. We need to understand that in recent times, the most important jihadi organization was Al-Qaeda, which of course under Osama bin Laden's leadership waged a major war and indulged in a very serious act of terrorism. But very often people don't realize that Al-Qaeda has never talked of waging jihad under the leadership of Al-Qaeda leaders. They never said that our jihad is under Osama bin Laden or Ayman al-Zawahiri. They initially talked of waging a jihad under Amirul Mu'minin, who was the leader of Taliban, that is Mullah Omar. And now they talk of, again, the present leader of Taliban, that is Mullah Khundzada. So this we need to understand. Very often people don't understand the theological dimensions of jihad. And for those theological dimensions, Al-Qaeda is very closely aligned with Taliban. Now, Taliban's capture of territory in Afghanistan gives theological legitimacy to Al-Qaeda's jihad, because now they have a territory. As I said, territory is essential. Now you have territory, you have resources, you have an Amirul Mu'minin, and that is how the jihad is. On the other hand, Islamic State, or Daesh as it is called, they declared a jihad, they declared a caliphate when they captured Mosul. They declared a caliphate, and at its peak, it governed over almost 12 million people. तो एक बहुत बड़ा इलाका था जिस पे दैश की हुकूमत चलती थी. लेकिन दैश और अल-कायदा में एक बहुत बड़ा अंतर था. वो ये था कि दैश अपने जो नेता थे उसको खलीफा कहता था, कैलिफ, और अल-कायदा जो तालिबान के नेतृत्व है उसको अमीरुल मोमिनिन कहता है. और उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि according to Islamic lexicon, caliph can only be from Quraysh, which is the tribe of the Prophet. Now, Abu Bakr al-Baghdadi, who
proclaimed himself as the first caliph of Islamic State, claimed to be from Quraysh. In fact, he claimed to be Sayyid also, that is, a direct descendant of the Prophet. Unfortunately for Al Qaeda, the Amirul Mu'minin is not even an Arab, he's an Afghan. So obviously he can't be from Quraysh, and that's why he has to be Amirul Mu'minin. And that's why initially Islamic State's credentials for waging global jihad were better and more immaculate than as compared to Al Qaeda, because Islamic State had a caliph, they had a territory, they had an army, they had resources. Whereas Al Qaeda at that point of time was claiming only a proto-state, somewhere between Afghanistan, Pakistan. They're saying that they're controlling some territory or something like that. And इसी कारण आपने देखा कि दुनिया से कई लोग बड़ी संख्या में इस इस्लामिक स्टेट की तरफ गए, पश्चिमी देशों से गए, पूर्वी देशों से गए, दुनिया के कई अलग अलग क्षेत्रों से गए और उन्होंने जाके इस्लामिक स्टेट और दैश के लिए लड़ाई की। अब कैसे मिले आपने पूछा, तो कोई फिजिकल मिलने की जरूरत नहीं हुई। आजकल साइबर वर्ल्ड के माध्यम से लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है। But what is the need of it? For example, somebody living in UK is living a good life. Why would they move? Why would they risk their life to reach there? See, this is what people need to understand. People very often don't understand the ideological motivation. And one of the biggest problems is people who are dealing with geopolitics or international relations are not experts in Islamic theology. So very often they try to create reasons for this sort of a thing, saying deprivation, poverty, none of that sort. Please remember, no poverty in UK. The 9/11 perpetrators were all from very good families. Osama bin Laden was one of the richest people in the world. So why did it happen? And this is where you need to understand, this is because they are driven by an ideology that makes them feel that this is their bounden duty to go and do. उनको ऐसा लगता है कि ये उनकी धार्मिक कर्तव्य है कि वो जाके इस तरीके की जंग को लड़े। तो ये जो ब्रेन वॉशिंग होती है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये लड़ाई बमों और बंदूकों से ही नहीं जीती जा सकती। इसके लिए हमें पहले उस आइडियोलॉजी को समझना पड़ेगा, उस विचारधारा को समझना पड़ेगा जिसके कारण हजारों किलोमीटर, हजारों मील दूर एक व्यक्ति जो कभी भारत से बाहर नहीं गया हो, इस कदर ब्रेन वॉश हो जाए कि वो इराक और सीरिया में जाने को, लड़ने को तैयार हो जाए। तो इसके लिए जो है ये विचारधारा को समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उस विचारधारा को नहीं समझेंगे तब तक आप उसको खत्म नहीं कर सकते। There is one more excuse or reasoning that people give is that, ISIS or ISIL, Daesh, they started from the Syria and that particular place. Why is it so? Why to torture their own people? Is this also part of jihad? Let's be very clear. They started from there. It was a Muslim area. They decided that there was a turbulence. See, all such organizations emerge when there is turbulence. As you know, the Americans decided to go into Iraq and they created a Pandora's box. I'm not trying to support that Saddam Hussein was a virtuous man, but under him, Iraq was a stable country. Let's be very clear about it. He had a stable country. Whatever be the reasons, the US decided to invade Saddam, and since then, Iraq has never been stable. Once Iraq became unstable, then there was, of course, Arab Spring in the Arab world, where entrenched regimes were sought to be toppled, started from Tunisia, went to Egypt, Yemen, Syria. And when the Syrian conflict exacerbated, these radical outfits also thought that they'll get. Initially, it was Al Qaeda. In fact, Al Nusra, grouping of Al Qaeda, a subset of Al Qaeda, which was fighting in Syria and Iraq. यहाँ से अलग होकर अबू बकर अल बगदादी और इन्होंने दैश की स्थापना की, और जब इन्होंने मोसुल को जीत लिया तो इन्होंने खिलाफत की बात की, और उस खिलाफत में लड़ने के लिए लोग दुनिया जहान से आए। उसी तरीके से अल कायदा की भी उत्पत्ति अरब वर्ल्ड में ही हुई, क्योंकि अरब वर्ल्ड इज द वन वेयर इस्लाम वाज बोर्न। सो ऑब्वियसली द रेवरेंस और
maybe you can say the loyalty or the ideological fervor is more in that part of the world. But another fact which we need to understand, and this is very relevant, is that both Ayman al-Zawahiri and Osama bin Laden, though they were from Egypt and Saudi Arabia, came to Afghanistan and Pakistan. And this we need to understand. Why did they do so? And this brings me to another question, that there is supposed to be a hadith which says that end of time battle will be fought in Khorasan. And in Islamic lexicon, Khorasan is this part of the world, which includes eastern Iran, Afghanistan, part of Pakistan, part of Central Asia. And they believe, that's why, as I said, both Osama bin Laden and Ayman al-Zawahiri came here and aligned themselves with Taliban, because they thought that under Amirul Mu'minin they will fight that end of time battle, कयामत से पहले की जंग. और किसके खिलाफ होगी? दजाल के खिलाफ. दजाल यानी एंटी क्राइस्ट. एंड उनका ये मानना है कि ये जो पश्चिमी ताकत है, विशेषकर अमेरिका, ये दजाल है, द एंटी क्राइस्ट है, और इनके खिलाफ इनकी जंग होगी और जिसमें ये जीतेंगे, और उसके बाद फिर गजवाए हिंद होगा और फिर एक वैश्विक इस्लामिक अमीरात की स्थापना हो जाएगी. ऐसा मानते हैं. कई इस्लामिक स्कॉलर्स का मानना है कि ये बड़ी कमज़ोर हदीस है, लेकिन ये लोग इस पर विश्वास करते हैं. और चूंकि ये हदीस है, इसलिए अगर आप देखेंगे तो अबू बकर अल बगदादी ने भी जैसे ही अपनी खिलाफत की स्थापना की थी, 6 तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर्स ने इस्लामिक स्टेट या दैश को बैत दी थी या उसके प्रति एलिजियंस अपना जो है शो किया था. और उसके बाद इन्होंने खुरासान चैप्टर ऑफ इस्लामिक स्टेट स्थापित किया. क्योंकि यह खुरासान चैप्टर महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप इस हदीस में विश्वास करते हैं तो कयामत से पहले की जंग यही होने वाली है. और इसीलिए जो है ये खुरासान चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया. और अब आप देख रहे हैं कि खुरासान चैप्टर और ज़्यादा एक्टिव होता चला जा रहा है. आपने देखा अफगानिस्तान में उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान में क्या किया, मॉस्को में क्या किया और ईरान में क्या किया. तो आप देखते चले जा रहे हैं इस्लामिक स्टेट की एक्टिविटीज़ बढ़. वैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इसमें क्या रोल रहेगा, या फिर कुछ रोल इम्पोर्टेंस इनको मिलेगा भी या नहीं इसमें? देखिए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अफगानिस्तान में आज तालिबान की हुकूमत है, इस्लामिक अमीरात है, अलकायदा उनके साथ जुड़ा हुआ है, अलकायदा का वैश्विक जिहाद उनके ऊपर निर्भर करता है. वो तालिबान के नेतृत्व में करना चाहते हैं. तालिबान अभी ये जानता है कि अभी उनके पास इतनी संसाधन नहीं है कि वो वैश्विक शक्तियों पर एक साथ ले सके. इसलिए अभी वो अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर रहे हैं अफगानिस्तान में, और इसलिए वो कोई ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाह रहे जिससे कि वैश्विक जो समुदाय है वो चेत जाए. लेकिन वैचारिक रूप से जितने भी संगठन हैं जो उनसे सहमत हैं, वो सब उनके यहाँ उनको पनाह मिल रही है, सबको नर्चर किया जा रहा है, सबको ट्रेन किया जा रहा है. तो वो तो अफगानिस्तान कर रहा है. पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल रीजंस के कारण चाहता था कि तालिबान अफगानिस्तान में आ जाए, लेकिन आने के बाद क्या हो रहा है कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, जो एक संगठन है जो तालिबान से वैचारिक रूप से जुड़ा हुआ है, जो अमीरुल मोमिनिन को अपना नेता मानता है और जो तालिबान के साथ अफगानिस्तान में लड़ा, वो अब ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गया है. और सीधी सी बात है कि अफगानिस्तान उनको पनाह दे रहा है. लेकिन अब चूंकि 2 संगठन हैं, पिछले कई सालों से एक जो महत्वपूर्ण बात हुई है मोसुल के गिरने के बाद, वो ये है कि आज दुनिया में 2 संगठन हैं जो वैश्विक जिहाद के लिए लड़ रहे हैं, एक दैश और एक अलकायदा. दोनों की विचारधारा काफ़ी हद तक समान है, दोनों का उद्देश्य एक है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों में टकराव है. दोनों एक दूसरे को गलत समझते हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं. कई मध्य एशियाई राष्ट्र जैसे रूस वगैरह और रूस ये सोचते थे कि तालिबान के आने से दैश कमज़ोर पड़ जाएगा, और इसलिए इन लोगों ने तालिबान का समर्थन भी किया. क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ कि इस क्षेत्र में ऐसी लड़ाइयाँ हुई मध्य एशिया में जहाँ तालिबान ने दैश के समर्थक वाले जो संगठन थे उनको हराया और उनको कड़ी टक्कर दी. लेकिन अब क्या हो गया, एक चीज़ को हमें यहाँ समझना चाहिए कि जो लोग तालिबान का समर्थन करते हैं,
तालिबान की विचारधारा का समर्थन करते हैं। और इस कारण अब तालिबान या अल कायदा के लिए अपनी विचारधारा में कोई उदारवाद को लाना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि अगर वो कुछ करेंगे तो अब एक ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। तो जो लोग हैं जो आज तालिबान के साथ हैं, कल वो दैश के साथ हो जाएंगे। और इसी कारण हम देख रहे हैं कि तालिबान का जब से हुकूमत हुई अफगानिस्तान में, दैश के हमले जो अफगानिस्तान के अंदर हैं, दैश के हमले जो अफगानिस्तान के अंदर हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं। और यही नहीं, उसके बाद दैश ने पाकिस्तान के अंदर भी हमले किए हैं, ईरान के अंदर इतना बड़ा हमला किया और अब मॉस्को के अंदर किया। तो दैश ये दिखला रहा है कि हमारे हाथ पैर जो हैं कमजोर नहीं हुए हैं, हम अभी भी काफी सशक्त हैं और दुनिया के किसी भी राष्ट्र पर हम हमला कर सकते हैं। उन्होंने रूस, जो कि दुनिया की एक बड़ी शक्ति है, सैन्य शक्ति है कम से कम, उस पर हमला किया, ईरान पे किया। तो वो अपनी पहुंच दिखा रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय है, कि हो सकता है अगर इसी तरीके से चलता रहा तो बहुत ही जल्द हम हो सकता है किसी पश्चिमी राष्ट्र पर एक बड़ा आतंकवादी हमला होते हुए देखें। There is a possibility of a very major terrorist strike in one of the Western countries. So we talked about the condition in Asia and the Europe, but there is one more continent which is suffering, which is Africa, right? And Africa is not in the limelight a lot, even when terrorist activities, they are at a very high amount over there. So Africa का इसमें क्या रोल है? नाइजीरिया, इजिप्ट, ऑल ऑफ दोस कंट्री, तो उसमें क्या रोल रहेगा? उनकी क्या दिक्कतें हैं? See, we need to be very careful. What happens is that Africa remains in the backwaters. Nobody actually focuses on it. And ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पश्चिमी देशों का ध्यान रूस यूक्रेन युद्ध की तरफ रहता है, सूडान के गृह युद्ध की तरफ नहीं रहता, सोमालिया की तरफ नहीं रहता, नाइजीरिया की ओर। अफ्रीका में आज की तारीख में दो बड़े संगठन हैं, एक सोमालिया में और एक नाइजीरिया में, बोको हराम, जो काफी हद तक इस्लामिक स्टेट से जुड़े। बोको हराम में अब दो घटक हो गए हैं, एक जो दैश से जुड़ा हुआ है और एक जो दैश से अलग हो गया है। ये दोनों भी वैचारिक रूप से बहुत ही फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बोको हराम का तो लिटरल मीनिंग है कि पश्चिमी एजुकेशन को बंद करने के लिए, खत्म करने के लिए, और इनका नाइजीरिया के हिस्से में और उसके आसपास के कई राष्ट्रों में बहुत बड़ा आतंक है और इनके पास काफी बड़ी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया की नजर जो है अफ्रीका की ओर कम जाती है और ये यहाँ फूल रहे हैं। बट वो टाइम बम बनता जा रहा है। बिल्कुल। और उसके साथ ही साथ सोमालिया, अब जैसे सोमालिया आप देखिए, सोमालिया में दक्षिण की ओर अल शबाब है, जो कि एक संगठन है जो बहुत ही कट्टरपंथी संगठन है और वो भी सोमालिया में काफी शक्तिशाली है। उसने काफी बड़ी हिस्सा सोमालिया के अंदर कैप्चर कर रखा है और जो सोमालिया की जो केंद्रीय सरकार है वो एक कमजोर सरकार है आज की तारीख में और सोमालिया काफी हद तक विघटन के कगार पर खड़ा है। और ऐसे हालात में ऐसे संगठनों को फलने फूलने का मौका मिल रहा है और क्या हो रहा है कि वो यहाँ से जो उनको एक बेस मिल जाता है, इससे वो अन्य राष्ट्रों में आतंकवादी हमले करते रहते हैं। हमने देखा कीनिया में हुए, युगांडा में हुए, इस तरीके के जो हमले होते रहते हैं, समय समय पर होते रहते हैं। उसी तरीके से पश्चिमी अफ्रीका में अब देखिए, नाइजीरिया के आसपास जितने भी राष्ट्र हैं वहाँ बोको हराम के समय समय पर हमले होते रहते हैं। का एक जमाना था जब उन्होंने करीब 100-200 बच्चियों को किडनैप कर लिया था, कभी कहीं हमला कर देते हैं, कभी किसी पे हमला कर देते हैं। तो एक बहुत ही शक्तिशाली संगठन के रूप में वो उभर के आए हैं और यहाँ हमें समझना चाहिए कि नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है और नाइजीरिया की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो कट्टरपंथी लोग विचारधारा है, ये आने वाले समय में और बढ़ने की संभावना है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। अफ्रीका में चूंकि विकास भी उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, इसलिए इनको काउंटर करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये आपने भी लाइक हमने फर्स्ट आंसर में भी यू टॉक्ड अबाउट कि दे कीप ऑन
लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस कि ये एक्सक्यूज है, वो एक्सक्यूज है. उसके अलावा क्या क्या एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं बाय वेस्टर्न मीडिया या फिर जो सिंपथाइजर्स हैं इनके? बिकॉज यू नो व्हेन अ जिहादी ही डाइज, so they're very clear about it that they are jihadis, but then there are supporters who says no, they're you know they're poor and they had their issues. See, it's not their supporters who say so. This is actually not even sympathizers. This is the justification which so-called analysts give for their actions. Many analysts align it that this is because of Palestinian cause. But if you go to Daesh's website or go to they never talked of Palestine. For them, these narrow pieces of land do not make a difference. Their aims and objectives are global. तो ये हमें समझना चाहिए. दुर्भाग्य से क्या है कि जो हमारे यहाँ जो विश्लेषक है, वो अधिकांश विश्लेषक जो है थियोलॉजी नहीं समझते, धर्मशास्त्र को नहीं समझते, दर्शन शास्त्र को नहीं समझते, तो वो लोग जो हैं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं. इकोनॉमिक एंगल से देखते हैं, सोशियोलॉजिकल एंगल से देखते हैं. वो बोलते हैं गरीब हैं, डेप्रिवेशन है, फिलिस्तीन का मामला है, इसका मामला है, अफगानिस्तान, ये दुनिया भर के जो एक्सक्यूजेज हैं वो दिए जाते हैं. पर हकीकत ये है कि जो व्यक्ति दैश और अलकायदा को ज्वाइन कर रहा है, वो ना तो फिलिस्तीन से प्रभावित होकर जा रहा है, ना इराक से, ना सीरिया से. वो एक विचारधारा से प्रभावित होकर जा रहा है, जो विचारधारा कहती है कि हमारा उद्देश्य है कि वैश्विक इस्लामिक अमीरात की स्थापना होनी चाहिए, और वो उस वैश्विक इस्लामिक अमीरात की स्थापना के लिए जो है ऐसे संगठन को ज्वाइन करता है. और उसको ऐसा लगता है कि अगर वो इस काम में शहादत भी दे देता है तो उसको जन्नत नसीब होगी कयामत के दिन. तो ये जब विचारधारा आ जाती है कि तुम चाहे कुछ भी करो, तुम्हें कयामत के दिन जन्नत मिलेगी, तो कई बार आदमी जो है इस तरीके से करता है. इसका जो उत्तर है वो धार्मिक विचारधारा में है, जो विचारधारा इसको प्रमोट करती है. इसको मेरे ख्याल से सोशियो इकोनॉमिक रीजंस में ढूंढना मेरे ख्याल से गलत है. Is there a way to stop it? यस, मेरा हमेशा से ये मानना है कि इसको काउंटर किया जा सकता है, और इसको काउंटर करने के लिए डी रेडिकलाइजेशन आवश्यकता है. और डी रेडिकलाइजेशन कैसे हो सकता है? डी रेडिकलाइजेशन जब ही हो सकता है जब आप इस्लाम को समझें, थियोलॉजी को समझें, क्योंकि इस्लाम में बहुत सारे ऐसे वो हैं, आपके पास हदीस हैं, बहुत सारे प्रॉफिट के इंसिडेंट्स हैं, जिनको अगर आप प्रोपेगेट करें तो आप लोगों को बता सकते हैं किस तरीके से प्लूरलिज्म हो सकता है, किस तरीके से दूसरों की विचारधाराएं सुनी जा सकती हैं, किस तरीके से उदारवाद आ सकता है, और किस तरीके से भिन्न विचारधाराएं फल फूल सकती हैं. तो उसके लिए काउंटर नैरेटिव बनाना बहुत आवश्यक है ना. वो काउंटर नैरेटिव बनाने वाले लोग जो हैं, एक तो ये सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी अपना काउंटर नैरेटिव नहीं बना सकता. इसको एक सेंट्रली बनाना पड़ेगा, और इसको फिर पाठ्य पुस्तकों और मीडिया के माध्यम से डिसेमिनेट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा जो युवा है या जो वैश्विक युवा है वो इन झांसों में नहीं फंसे, इन विचारधाराओं में से प्रभावित ना हो जाए और इस तरीके की घटनाएं ना. But don't you think it is a difficult task, because then international level पे ये सब होना चाहिए, each and every country needs to actually participate in it? Undoubtedly, that's a fact, because today's terrorism transcends national borders. You cannot, one country cannot make an de-radicalization program. It has to be made nationwide, internationally, but at least let each nation start a work, and then there is a collaboration. Now if you'll see, most multinational organizations have counterterrorism as one of the components. Shanghai Cooperation Organization, counterterrorism is a key component of it. At least these are the countries which could come together. At least Moscow, after this incident, should actually emphasize. There is also a feeling that very often we are willing to cohabit with such organizations whose ultimate objective is jihad, for narrow geopolitical short-term objectives, like Taliban. Now people might say anything to Taliban. Taliban eventually wants the establishment of a global Islamic Emirat. Now today they may say anything or whatever they might. Now if this organization flourishes, it will eventually pose a threat to the entire regional peace, whether we like it or we don't like it. Like we saw in Hamas.
See, Israel at one stage facilitated Hamas to have its control over Gaza, thinking that it will weaken the Palestinian Authority. But what happened eventually? Eventually, it has come to bite them. So, we need to understand that such Frankenstein's monsters should not be allowed to thrive in this world. And that is for the international community to ensure that such safe havens where this sort of ideology thrives and then flourishes should not be allowed to exist. Last question, Alokji. What role can India play in this whole thing? See, India has a very, very major role to play. You need to understand, we have world's second or third largest Muslim population. The good thing is that we have a pluralistic society. Please remember, invariably people who grow up in a society where only one idea, one ideology exists, or one sort of people exist, become more radicalized because they are not exposed to any alternate worldview. Fortunately, in India, most children are exposed to alternate worldviews. Right. Though, of course, we are also having a problem that there is a ghettoization of minorities, which should actually be avoided. We could take some steps like Singapore has done, where they have gone in for forced assimilation of the people. They have made it mandatory that housing societies should have people, at least the government housing societies which are funded by the state, have people from all different ethnicities, religion, etc. But more importantly, we have a large number of scholars of Islam within our country. And we have major schools like Deoband, etc. We can create a de-radicalization strategy. We can come up with a counter narrative. This counter narrative is important, and that counter narrative has to be powerful. And important is when it is disseminated, the target must not know that you are trying to de-radicalize them. Because if the target realizes that your attempt is to de-radicalize them, then the whole purpose is defeated. It has to be so subtle. That's why I said it has to be percolated slowly by textbooks and media. And within Islam, there are so many instances of pluralism. There were different thoughts which existed in different times. There was a time when there was a Mutazilite thought which Al-Mamun propagated. There was a time when Karmatians were controlling. There were different thoughts at different times. And you'll see, if a child is exposed to a fact that there can be differences and there are different interpretations and different ways of attaining the same thing, you will find that he or she will have greater tolerance to ambiguity. Otherwise, what happens is that these people who are radicalized believe it's only one way which is the right way. Right. And rest everything is wrong. Thank you, Alokji, for speaking on this very important topic. I just really hope that our audience, it will help them a lot. Thank you for speaking to us today. Thank you so much.